जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलनाज़ मुश्ताक है और मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी करवाती हूँ थोड़ी देर में। सो ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ टॉपिक टुडे, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज़ द ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, जिसके ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हो और उसके बारे में जो है वो आप सीख सकते हो। आज का जो हमारा थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन जो एक एजेंडा है, दैट इज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न एंड हाउ कैन वी स्टार्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न। इस पे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। इसके अलावा अगर हमने इससे पहले कोई सर्टिफिकेशन प्रोफाइल बनाई थी तो वो कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या होती हैं, हम अपने लर्निंग पाथ्स को खुद कस्टमाइज कैसे करते हैं और हम फिर अपनी जो लर्निंग पाथ्स हैं उनको लेटर ऑन ओपन करके लर्निंग दोबारा स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हमें माइक्रोसॉफ्ट फ्री लैब्स भी देता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हम कौन कौन से चैलेंजेस माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम एग्जाम्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Okay, so this is my kind of introduction. My name is Gulnaz Mushtaq, and I am Microsoft certified trainer since 2018, and I have trained hundreds of students all over the world, and now serving the MCT community in Pakistan as Microsoft certified trainers regional lead. And I have diversified experience in the field of information technology. मैंने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में ही काम किया है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस दोनों सेक्टर्स के साथ है। इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एमसीटी कम्युनिटी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर बनते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टूल्स मिलते हैं जिसमें आप ट्रेन कर सकें। तो उसमें मैंने पावर बीआई टूल जो है बड़ा पॉपुलर है आजकल, पावर बीआई, तो उसका एक टूल जो है वो मैंने उसको रिक्वेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एम के लिए करवाया था। इसके अलावा मैं फॉरम्स के ऊपर लिखती भी हूँ और मेरी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो मेरा टेक्निकल एरियाज हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एजर, माइक्रोसॉफ्ट एजर जो द मोस्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्लाउड बन चुका है आजकल माइक्रोसॉफ्ट का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मैं सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटीज़ के ऊपर भी मेरी एक्सपर्टीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजुअली आप लोग जानते होंगे ऑफिस 365 के हवाले से, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 इज़ द न्यू नेम फॉर ऑफिस 365। इसके अलावा मैं जैसे मैंने बताया कि मैं ट्रेनर भी हूँ और एमसीटी रीजनल लीड फॉर पाकिस्तान भी हूँ। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से माइक्रोसॉफ्ट अपनी रिसर्च कर रहा था और उसको प्रॉपरली लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने अभी। और ये सबके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन, whether you are a professional, whether you are doing some job, or whether you are a student of some university. And if you are a student of some university, so that is more beneficial for you. So ये हम आज का जो हमारा पर्पस है उसमें हम ये भी बताएंगे कि हाउ इज दैट हाउ दैट वुड बी एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स एंड फॉर द एवरीवन। ओके, सबसे पहले अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न को स्टार्ट करना है कि हाउ विल यू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई हॉटमेल या आउटलुक की आईडी हो। पहले जैसे आप लोगों को पता है कि हॉटमेल की जो आईडीज़ होती थी, माइक्रोसॉफ्ट की ही एक ईमेल प्लेटफॉर्म है, तो अभी वो कन्वर्ट हो गई है टू आउटलुक। सो आपके पास कम से कम एक आउटलुक या हॉटमेल की आईडी होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये आईडी क्रिएट कर लें आउटलुक की, और ये आपको बेनिफिट देगा फॉर माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो आप जब आगे सर्टिफिकेशन साइट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशंस हैं, तो उसमें भी ये आईडी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो लिंक हम देख रहे हैं, इस लिंक के ऊपर हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ओपन दिस लिंक, मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और इसको हम किसी भी ब्राउज़र विंडो के अंदर इसको ओपन करेंगे। ओके, मैंने इसको ब्राउज़र विंडो में ओपन किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास कोई लर्न अकाउंट नहीं है तो आपको ये एक पूरा एक पोर्टल नज़र आ रहा है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलेगी। हम आज इसको एक्सप्लोर करने लगे हैं और हम इसको सबसे पहले साइन इन करेंगे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू फर्स्ट टाइम दिस प्लेटफॉर्म। सो यू शुड हैव योर आउटलुक और हॉटमेल आईडी फॉर दैट, ठीक है।
तो हमने जैसे मेरे पास जो आईडी है वो ऑलरेडी मैक्स ऑफ लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे साइन इन को क्लिक करते हैं, आपको एक फॉर्म मिलेगा। यूजुअली जैसे आपको पता है कि जैसे ही हम किसी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्म मिलता है, तो उस फॉर्म के लिए फिर हमने उसको रजिस्टर करना है। सो हाउ वुड यू डू दैट? उसका प्रोसेस क्या है कि जैसे ही आप उस पर लॉग इन करेंगे तो वो फॉर्म आपको गाइडेंस देगा। और जैसे ये मेरी एक आईडी है विच इज़ mslearn.edu@outlook.com, ये मैंने वैसे ही क्रिएट की फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। तो ये आईडी आपको बताएगा कि ये आईडी आपकी वेरीफाइड हो गई है एंड यू आर साइन इन। उसके बाद आपको कहेगा कि क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे कहेगा कि अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपसे डिस्प्ले नेम पूछेगा, आपने अपना नेम बताना है। Okay, so one thing which I would like to explain and I would recommend actually कि आप डिस्प्ले नेम में अपना प्रॉपर नाम लिखें। ऐसा नहीं कि कोई किसी और का नाम लिखते हैं या वैसे कोई जनरल नाम लिखें। मैंने जैसे एक जनरल नाम जस्ट दी क्योंकि ये किसी का अकाउंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेमो देने के लिए। तो आपने अपना प्रॉपर नेम लिखना है क्योंकि यही नेम जो है आगे रिफ्लेक्ट होगा थ्रू आउट योर लर्निंग जर्नी एंड योर सर्टिफिकेशन जर्नी एज वेल। ठीक है, ओके, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये आपसे अपना रीजन पूछेगा कि आप जिस भी रीजन में हैं, यू आर डेफिनेटली इन पाकिस्तान रीजन, सो यू शुड मेंशन द पाकिस्तान रीजन, क्योंकि हमें अपने रीजन के हवाले से बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन है पाकिस्तान रीजन के लिए स्पेशली डिस्काउंटेड रेट के ऊपर हैं। तो अगर आपने रीजन कुछ ऐसा दिया कि जिसमें अभी आप एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसके दो नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये कि इन फ्यूचर आपकी जो चीज़ें आपके रीजन के साथ अलाइन नहीं होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और रीजन से आ रही होगी। दूसरा, जो आप सर्टिफिकेशन बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं वो शायद आपको ना मिले। सो मेंशन पाकिस्तान ओवर हियर। देन आपसे कहेगा कि आपका जब ये पाकिस्तान रीजन सेलेक्ट हो गया तो आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि जो ये मैक्स ऑफ लर्न प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म, सो इट वुड रिकमेंड यू फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। और जो भी आपके लर्निंग की जो चीज़ें हैं जिसको आप लर्न करना चाह रहे हैं, ये उसके बारे में आपको खुद ही गाइड करता रहेगा। देन यू विल क्लिक ऑन द सेव बटन, और जैसे ही आप करेंगे, हेयर यू गो, ऑल यू आर ऑल सेट। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका होगा। ओके, सो अब हम जाते हैं अपने प्रोफाइल में और हम उसको लाइव देखते हैं थ्रू ब्राउज़र। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी जो आईडी है मैं इसको ज़रा साइन इन कर लूँ। मेरी जो प्रोफाइल आईडी है दैट इज़ mslearnedu@outlook.com। तो इसी को हम यहाँ पे साइन इन करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ था। mslearnedu@outlook.com। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो मेरा पासवर्ड इसमें सेव है, इसलिए इसने मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा। आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, आप उसको ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपका लर्न प्रोफाइल लॉगिन हो चुका होगा। अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने इसको साइन इन किया, अब यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया। उसकी बजाय यहाँ पे एक आइकन शो कर रहा है, हम इस आइकन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बता रहा है प्रोफाइल सेटिंग्स एंड फ्यू मोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू गो टू द प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, एंड प्रोफाइल सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, जैसे आपकी एक्टिविटी क्या है। ठीक है, अगर मैं एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूं तो बेसिकली एक्टिविटी क्या चीज़ होती है कि आपने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या कुछ पढ़ चुके हैं आपने, क्या कुछ लर्न किया है आपने, वो तमाम की तमाम यहाँ पे मेरे एक्टिविटी सेक्शन के अंदर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कुछ कलेक्शंस नज़र आ रही हैं, कुछ एक्टिविटी छोटी मोटी नज़र आ रही हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट अ डेमो अकाउंट। जब आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, here you can see your level is increasing and you are getting more points। ठीक है, तो आपके XP मीन्स योर एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसके अलावा इफ़ यू गो टू द ट्रेनिंग सेक्शन, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ट्रेनिंग में आप आ जाएं तो यहाँ पे आपने जिन जिन चीज़ों की ट्रेनिंग अभी तक ली है, आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके अलावा चैलेंजेस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सभी डिस्कस करते जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन होता है अचीवमेंट्स का, कि व्हाट इज़ अचीवमेंट्स बेसिकली। ठीक है, अचीवमेंट्स में जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक ट्रॉफी नज़र आ रही है।
ठीक है, ये क्यों नज़र आती है ट्रॉफी? बेसिकली आपको ट्रॉफीज मिल रही होती है और मार्क्स ऑफ लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ट्रॉफी भी हम गेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन के अलावा हम देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या कुछ है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बेसिकली। इफ़ आई क्लिक ऑन द सेटिंग्स सेक्शन, सो हेयर यू विल सी कि अगर आपका प्रोफाइल बन चुका है और आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो आप सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आके आपको पूरा एक यूआरएल दिया जाएगा। ठीक है, ये यूआरएल कैसे होता है कि इसके जो स्टार्टिंग के जितना भी यूआरएल है या जो आप ये लिंक देख रहे हैं, ये फॉर द ऑल माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म यूजर्स ये सेम रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं, बट शुड नॉट मेंशन द स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि ये जो यूआरएल है ये आपके ब्राउजर के ऊपर ओपन हो सकता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, आपने कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और आपने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें गेन की। दिस इज़ जस्ट अ डेमो अकाउंट, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ट्रॉफीज़ वगैरह और पॉइंट्स और आपके लर्निंग बैचेस वगैरह। तो आपने जितनी भी लर्निंग यहाँ से की, जिस पर्सन को आप ये यूआरएल भेजेंगे वो आपके प्रोफाइल को देख सकता है कि इस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना सीखा है, क्या कुछ स्किल्स जो है वो उसने गेन कर ली। तो दिस इज काइंड ऑफ योर प्रोफाइल एज वेल। अगर आपने पहले नाम कुछ और दिया था गलती से, बाद में चेंज करना है कुछ और, मतलब आपने ठीक नाम देना है, कुछ गलती से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो आपने अपना डिस्प्ले नेम यहाँ से चेंज करके सेव कर देना। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेटिंग सेक्शन। इस तरह आप प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, कम बैक टू दिस पॉइंट कि अचीवमेंट क्या है। बेसिकली हमारे पास अचीवमेंट तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वुड यू स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी? सो हेयर इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्रोफाइल एंड हेयर इफ यू क्लिक ऑन दिस ट्रेनिंग टैब, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यू कैन सी कि इसने कहा कि आपको यहाँ पे कुछ सीखना है और आपने इससे पहले विजिट किया है और आपने उसमें ये चीज़ें देखें, परसेंटेज आ रही है, ये सीखी हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट विजिट में आपने ये सीखा है। तो आपको बेसिकली ये नज़र आएगा, वी थिंक यू माइट लाइक दीज, यानी कि ये आपको सिस्टम कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हो। जिसमें आप ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एजर एआई फंडामेंटल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रोसॉफ्ट एआई फंडामेंटल एक्सप्लोर विजुअल टूल्स फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। और बाकी भी काफ़ी चीज़ें, जैसे आपने एजर के बारे में सुना होगा, द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो उसमें अगर आपने एजर को सीखना है, आपको इंटरेस्ट है, तो उसके भी काफ़ी मॉड्यूल हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ चीज़ों को अपने तरीके से सीखने की कि हमने कैसे उसको सीखना है। तो बेसिकली जब आप इस तरह आ जाते हैं अपने यहाँ पे लर्निंग उस पे सॉरी ट्रेनिंग टैब के ऊपर, तो ट्रेनिंग टैब के ऊपर आपको ये सारे पाथ बता रहा होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने अगर इनके अलावा कुछ मोर पॉपुलर पाथ्स देखने हैं तो आप यू विल गो टू द एक्सप्लोर अदर पॉपुलर पाथ्स। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे हम जाते हैं एक्सप्लोर टू अदर पॉपुलर पाथ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, ठीक है, अभी देखें क्या लिखा हुआ है, रोल्स, कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बड़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। कि पहले ऐसा होता था कि कुछ ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशंस होती थी जिसमें एक पर्सन को 4-5 पेपर्स देने पड़ते थे, फिर वो कहीं जाके एक टाइटल गेन करता था। अब ऐसा नहीं है, अब ये है कि जिसने भी किसी रोल के ऊपर काम करना है उसको एक पेपर देना होगा या मैक्सिमम 2 पेपर्स। इन अ फ्यू केसेस देयर आर ओनली 2 पेपर्स। मेजर जो सर्टिफिकेशंस हैं वो सिर्फ एक पेपर देने से ही आपको टाइटल मिल जाएगा। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। एक बहुत अच्छी और चीज़ हो गई है कि आपने जिस रोल के ऊपर फ्यूचर में काम करना है आपको सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं रोल्स। तो रोल्स में क्या है, अगर आप एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, यू विल गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है, you can go for the AI engineer. If you want to have something about app maker, अगर आपने वो करना है, ठीक है, इसमें और बड़ी सारी चीज़ें, डेटा एनालिसिस वगैरह वगैरह। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोल्स में सेलेक्ट किया कि मुझे एआई इंजीनियर और इसके अलावा मुझे डेटा एनालिसिस से थोड़ा बहुत लगाव है, मुझे वो भी सीखना है। तो ये सिर्फ आपके जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये देखें खुद ऑटो सेलेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, मैंने एआई इंजीनियर किया, इसने कहा एजर एआई फंडामेंटल, ठीक है, मशीन लर्निंग, देखा आपने सारी यानी कि रिफाइंड चीज़ें हो गई। ठीक है, तो जितनी भी आप चीज़ों को रिफाइन करना चाहेंगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अदर दैन एजर डॉट नेट भी सीखना है तो इसमें आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आपको कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। इसके अलावा हम वी गो टू बैक टू द ट्रेनिंग सेक्शन। अगर हम ट्रेनिंग सेक्शन में जाएं और हमें यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा था एक्सप्लोर पॉपुलर पाथ, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली कुछ चीज़ें आई हैं, ये इनमें से हमें कुछ पसंद है, हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शंस। ठीक है, व्हाट आर कलेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पाथ सेलेक्ट किया था, हमें कोई एक मॉड्यूल पसंद आया था जो हम चाहे हम यहाँ से देख रहे हैं या हम यहाँ पे इनमें से कोई एक मॉड्यूल पसंद आ गया, या हमने एक्सप्लोर अदर पॉपुलर पाथ्स पे गए थे तो हमें वहाँ से कुछ मॉड्यूल पसंद आए। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से हमें फॉर एग्जांपल एआई इंजीनियर एंड इसका कुछ कोडिंग वगैरह इसकी हमें ये चाहिए, जैसे हमें डॉट नेट प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ था, हमें डेवऑप्स के बारे में जानना है, ठीक है, वगैरह, या डेवलपर बनना है, वटेवर। इसमें से अब हमने कौन सा मॉड्यूल चूज करना है। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एजर फंडामेंटल क्लाउड कंसेप्ट्स के बारे में जानना है, या हमने कुछ और चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मैंने इसको ओपन किया और ये मेरा पूरा एक लर्निंग के लिए एक चीज़ रेडी हो गई। ठीक है, शुरू में ये आपको बताएगा कि ये चीज़ें हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं, हम इसमें ये सीखना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए, हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया हमारा जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो गई, और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल का मुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे और मेरे यहाँ पे पॉइंट्स में इजाफा होता जाएगा। अब हमने जैसे जैसे इसको रीड आउट किया, पूरा पढ़ना शुरू किया, कंटिन्यू किया, और इसके बाद हम ये पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ते रहे, और इसको स्टडी करने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। फिर दरमियान में ऐसा हुआ कि हम किसी काम से जाना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको डायग्राम्स के वाइज भी समझाएगा, और बीच में आपके पास फ्री लैब्स भी आ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगी फ्री लैब की। तो फिर हमने देखा कि ये यहाँ पे हमें सारा कुछ हम पढ़ रहे थे, हमें बीच में कोई काम पेश आ गया और हम चाह रहे हैं कि हमने इसी सेक्शन से दोबारा स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये प्लस साइन आपको टॉप पे नजर आ रहा है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कहता है कि क्या आप इस कलेक्शन को अपने पास ऐड करना चाहेंगे, सेव करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अब कलेक्शन का नाम क्या है जिसको हम सेव कर रहे हैं, हम स्टार्ट हमने किया था एजर फंडामेंटल डिस्क्राइब एजर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे, मैंने इसको प्लस किया, और हम इसको फेवरेट्स में ऐड करना चाहते हैं। एक फेवरेट्स का टैब बना होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर हम इसको न्यू कलेक्शन के तौर पे सेव करना चाहते हैं, न्यू, तो मैंने इसको नाम दे दिया एजर आर्किटेक्ट। ठीक है, और करने के बाद डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है, मर्जी आप देना चाह रहे हैं, और सबमिट कर दें एंड सेव कर दें। ओके, अब आपने ये कलेक्शन सेव कर दी, उसने कहा एडिट टू कलेक्शन सेक्शन। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको पढ़ना चाहेंगे ये यहीं से आपका स्टार्ट लेगा। ठीक है, जहाँ से आपने इसको सेव किया था। कैसे और इसको ओपन कैसे करेंगे, आप लर्न प्रोफाइल में आ जाएंगे, आपने यहाँ पे जाना है, आपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, और प्रोफाइल सेक्शन में आपके पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन आएगी कलेक्शंस की। ठीक है, तो आप कलेक्शंस में जाएंगे, और कलेक्शंस में फिर आपके पास ये कलेक्शन जो अभी अभी आपने सेव की थी, आप यहीं से इसको क्लिक करेंगे, और आपकी जहाँ से जर्नी ख़त्म हुई थी वहीं से इसने दोबारा आपको
स्टार्ट दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जहाँ से इसको छोड़ा था वहीं से आप इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किसी भी स्टेज पे आपने कलेक्शन को कंप्लीट किया या मे बी नहीं कंप्लीट किया, ठीक है, जो जो कलेक्शन आप कंप्लीट करेंगे, आपके जो लर्न प्रोफाइल के अंदर आपके बैचेस भी आते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरी लर्न होम स्क्रीन है, तो लर्न के अगर मैं जाऊं प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, तो लर्न प्रोफाइल सेक्शन के अंदर ये देखें मुझे बैचेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके बैचेस भी आ जाएंगे, आपके ट्रॉफीज भी आती जाएंगी, इसके अलावा आपके कुछ रेपुटेशन पॉइंट्स बनते जाएंगे। दीज आर बेसिकली रेपुटेशन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल इनहेंस होती जाएगी। ठीक है, तो आपके कुछ बैचेस होते हैं, जैसे मैं अगर इसको क्लिक करूं, जो आपने कंप्लीट किए होते हैं, कुछ बैचेस है तो ऐसे होते हैं जो आपने कंप्लीट किए होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आपने बैचेस कंप्लीट नहीं किए तो वो एज अ समझें कि आप उसमें कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप लेटर ऑन उसको कंप्लीट करें। ठीक है, अब ये देखें ये बैचेस का क्या फ़ायदा है। ये बेसिकली तब मिलते हैं जब आपने किसी खास टॉपिक को कंप्लीट किया होता है। जैसे अभी हमने कलेक्शन सेव की, जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तो हमें एक बैच मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बैचेस जो हैं इनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें एक प्रिंटर का ऑप्शन बना हुआ है, इससे जैसे मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि ये मुझे प्रिंटिंग की ऑप्शन देगा। ओके, अब ये देखें ये पूरे का पूरा सर्टिफिकेट होता है आपके पास। ठीक है, कि आपने ये काम कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह के सर्टिफिकेट्स अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें डिस्प्ले नेम एडिट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये जो आपका कह रहा है कि इस तरह से नज़र आएगा, इसको आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट के बाद अगर आपके पास फिजिकल प्रिंटर मौजूद है तो उसको फ़ौरन से प्रिंट ले लें। अगर नहीं भी है तो ये देखें प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट टू पीडीएफ फॉर्म, तो आप इसको अपने अपने पास अपने कंप्यूटर में एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास सेव होते जाएंगे। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस क्या चीज़ होती है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्टिफिकेशंस की हैं, अगर वो आपको आपने उस पे जैसे लर्निंग प्रोफाइल में तो आपने ट्रेनिंग ली, आपने उसको पढ़ा अच्छी तरह से, आपने उसको थॉरली स्टडी किया, लेकिन जब आपने सर्टिफिकेशन पे गए तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको पेपर देने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, और पेपर में यूजुअली जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि सर्टिफिकेशंस हम कहाँ से देखते हैं, इसी लर्न प्लेटफॉर्म के यहाँ टॉप वाले मेन्यू में आ जाएं। ठीक है, जहाँ पे अभी तक हम ट्रेनिंग देख रहे थे हम सर्टिफिकेशंस पे आ जाते हैं। अब मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि वो हम अभी एंड में बताती हूँ कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी के जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप लोगों के लिए अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का आईडी बना हुआ है तो आप इस पे एक प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो उस आईडी को वेरीफाई कराएंगे फ्रॉम योर लर्न प्रोफाइल। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट उसको वेरीफाई कराएंगे तो आपको जितनी भी फंडामेंटल लेवल सर्टिफिकेशंस हैं उस पे फिर जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप इसको इन फ्यूचर फ्री भी कर सकते हैं। और इस पे जो है वो आप जो है जितनी फंडामेंटल्स हैं वो हम अभी देख लेते हैं। ओके, हम सर्टिफिकेशंस पे गए और सर्टिफिकेशन में हमें पूरा बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, बाय रोल कौन कौन सी हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले काम किया कि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो तब कौन से हमने लर्निंग करनी है, इंजीनियर बनना है, एआई आर्टिफिशियल इंजीनियर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐप मेकर या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें डिफरेंट सर्टिफिकेशन। इसके अलावा कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता है कि अभी तक दुनिया में ये सर्टिफिकेशंस बहुत पॉपुलर जा रही हैं, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजर फंडामेंटल्स AZ 900 और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसे जिसमें हम ऑफिस एप्स की बात करते हैं MS 900। ठीक है, और इस तरह की कुछ और। तो फंडामेंटल जो सर्टिफिकेशंस हैं वो रिकमेंड करती हूँ मैं आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि आप उसके बारे में जो है उसको ज़रूर स्टडी करें और आप उस पे जाएं। ठीक है, अब इसमें अगर हम जाते हैं ब्राउज ऑल सर्टिफिकेशंस, तो हमें यहाँ पे ब्राउज ऑल सर्टिफिकेशंस पे फिल्टर भी देगा कि आपने रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस में कहाँ जाना है। ठीक है, बता दें टाइप्स क्या है सर्टिफिकेशंस और इसमें फिर फर्दर कौन सी सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं। आप एजर सर्टिफिकेशंस करना चाह रहे हैं तो एजर से रिलेटेड तमाम सर्टिफिकेशंस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो आप सर्टिफिकेशन लेना चाह रहे हैं
वो कौन से लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, एडवांस्ड लेवल हो। तो जो इंटरमीडिएट है वो सिर्फ इंटरमीडिएट की कैटेगरीज में आएंगी, जो एडवांस्ड हैं वो एडवांस की कैटेगरीज में आएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप सर्टिफिकेशंस को भी देख सकते हैं। ओके, टाइम की शॉर्टेज है। लर्न प्रोफाइल जो है, इट्स अ ह्यूज प्रोफाइल। इसमें इसको एक्सप्लोर करें तो हम, हो सकता है कि हमारा काफ़ी 3 से 4 घंटे भी कम लगे। मैं आपको बहुत क्विकली कुछ चीज़ें बता रही हूँ। ओके, अब हम वी जंप टू द लैब सेक्शन। अब लर्न प्रोफाइल के अंदर आपको लैब्स भी मिलती हैं जो कि फ्री फ्री होती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप पहले अपने अकाउंट से जो है वो इसको प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करके फिर आप जाएं। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास एक लिंक है और मैं इसको ओपन करूं फ्रॉम माय ब्राउज़र विंडो। ठीक है, ये इसी को ले लेते हैं। मैं सेकंड टैब ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि आपको माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से लैब भी फ्री दे देता है। जैसे आप कुछ सीख रहे थे और दरमियान में एक ऐसा टॉपिक आया जिसके लिए आपको लैब की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डेव टेस्ट लैब्स, यानी कि डेवलपर्स के अगर टेस्टिंग की कोई लैब है, ये कोई इट्स अ काइंड ऑफ लैब। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दी गई है और आप इसको जो है चलाना चाहते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा ये लैब यूज़ कर लिया है, इसलिए मुझे कह रहा है कि आप डिफरेंट अकाउंट से यूज़ करें। ठीक है, तो एक दफ़ा एक प्रोफाइल से आपने वो लैब इस्तेमाल करनी है और कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे के अंदर आप लैब को कर लें। ठीक है, तो यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद यहीं पे आपका पूरा एक लैब इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपको पूरे का पूरा वो जो कोडिंग है वो सारी भी बताएगा कि आप इस पे ये काम करें, और साथ आप जो है वो दे देखें कोड्स भी बता रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द कोड थिंग, बिकॉज हर मॉड्यूल की लैब जो है वो अपनी अपनी होती है। जो फील्ड, जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बताएगा। ओके, सो वी आर गोइंग वेरी क्विकली कि हमें एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने से क्या फ़ायदा है। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक के बेनिफिट्स बीइंग योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल हो, जो कि यूनिवर्सिटी के यूआरएल से, या जो डोमेन होती है जिसको आप ब्राउज़र से ओपन करते हैं, आपका एक ईमेल आईडी प्रॉपर बनाओ। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी की ईमेल से फिर आप अपना स्टूडेंट अकाउंट जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई एम ओपनिंग दिस लिंक। इस लिंक को मैं अभी ओपन कर लेती हूँ ब्राउज़र के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेके जाता है। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ एन इनिशिएटिव फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड रेडी स्किल्स। और इसके अंदर जो है वो हमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट दोज आर वर्किंग अंडर हायर एजुकेशन कमीशन, और इसमें इन तमाम को सर्टिफिकेशन जो है वो फ्री मिल रही है, कि आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जी 2 मिनट दीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी, तो आपको ये जो लिंक है, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कि आप जब ये लिंक ओपन करेंगे इसमें आपने साइन इन करना है। ठीक है, आपके पास एक अकाउंट होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है ऑलरेडी, जैसे हमारे पास ये लर्न अकाउंट है। ठीक है, हमने अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करना है और इसको यहाँ से साइन इन करना है। अब जैसे आप इसको साइन इन करेंगे, ये जितने भी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट एजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फंडामेंटल एआई 900, ये हमारी एग्ज़ाम कोड है। ठीक है, हम पहले इनके बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम इसके एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 फंडामेंटल, जिसमें ऑफिस 365 एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट एजर डेटा एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, ये तमाम इनके कोड्स मेंशन है। तमाम के जो है वो अपने अपने कोड हैं। ये आप देख लें कि ये तकरीबन कोई हमारे पास 8 के करीब सर्टिफिकेशंस हैं।
जो आप बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो इसको कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो हमारी दूसरी प्रेज़ेंटर हैं वो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताएँगी। तो आई आई वुड लाइक टू अ एक्सप्लेन इन मोर डिटेल इंशाल्लाह। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे, यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी के जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो जिन्होंने आज ये सेशन किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच मी ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल एज़ वेल। तो जो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यू कैन फाइंड मी एज़ अ गुलनाज़ मुश्ताक, ठीक है? ये प्रोफाइल मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मुझे इस पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह टुगेदर वी विल मेक अ चेंज। और मेरी जो वेल विशेज़ हैं दोज़ आर विद यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू उस्मान। जी, उस्मान, ओवर टू यू। आई थिंक Tiago is with us. Hello, Tiago. Hello, good Hi, morning or good afternoon, everyone. thank you. So, do you think I can get started, or should we Yeah, wait yeah, for? sure. Sure, Tiago, sure. Yeah, yeah. Okay, cool. Okay, so let me just share my screen here then. Okay, so we should be seeing my screen right now. And let me just jump in here and pushing this here. So, yeah, okay. So first of all, thank you very much for having me here today. It's always a pleasure to speak for this kind of audience. It's just very always very good. Um, so I'm going to talk a little bit about, just why should you get certified and what are like kind of the main advantages, that you have in getting Microsoft certified. Doing a short presentation about myself. My name is Tiago. I basically work as a cloud architect and advisor, which it's kind of a fancy name to say that I help companies moving workloads into the cloud, so their applications into the cloud and applications that they currently don't have in the cloud, but they are running, basically inside their on-prem network. We also help moving, so migrating those into the cloud. I'm also a Microsoft certified trainer, which leads me to basically deliver classes and help people get certified. And I'm also the author of some courses that you can find online on LinkedIn Learning, Pluralsight, etc. And I'm also an international speaker where I basically speak in events that range from, those very small meetups with just a few people to those big conferences like Microsoft Ignite, Microsoft Build. So it's always a pleasure to have an audience, and it really doesn't matter which size, to be honest. I just like, to share the knowledge and help people getting certified. Um, Basically, I'm also Microsoft Azure MVP, certified trainer, a bunch of other certifications, and I'm based in Lisbon, Portugal. And just a curiosity, I already visit, 77 countries. So one of the things that I love is to travel. It's one of the best things that my job allows me to do. Is I'm always traveling around the world, which there's still some countries missing in that list. Pakistan is one of them, so it's not on that 77 countries. So for sure, one day I need to visit because I know it's a beautiful country. So congratulations for that, by the way. So what's the agenda today? So the agenda today is talking a little bit about why should you get certified, the Microsoft certification program, certifications, and then just my 4 steps to get certified. They're not unofficial 4 steps. It's just the Tiago 4 steps to get certified. Okay.
So let's start with why. So why should you get certified? So I was very curious and I really studied this why a lot, to be totally honest. Probably way more than my free time allows me to, but I'm really always very curious, you know, why people want to get certified and what they achieve after, they get certified. So I did a poll. Some time ago, I did a poll and I did a poll on LinkedIn and on Twitter, and basically this was the result that I got. My question was, what is the main reason why you're going to get certified? And with a huge difference from all the others, I have to confess I was very surprised. I was expecting this result, but still very surprised that the biggest part is to update my skills and my knowledge, and this is important. And you know why? Sometimes people that are still not in the market, they see the certification has an easy way to get a job, which is not a lie. Okay, you see their career opportunities also with 20%, 11% on the other side. So definitely, it is also something that you're also going to get. But the most important part of getting a certification is what I tell is the journey that you take to get a certification, because you don't get a certification by, just sitting on the exam, boom, I get the certification and I'm done. It's a journey. It's a journey where you have to prepare, you have to study, and you're going to learn lots and lots of new things. For example, I think I'm a seasoned professional already. This is just a nice way to say I'm old, okay? And a couple of weeks ago, I took my latest certification, which is basically a certification that is the cybersecurity architect. It's not an easy certification to take, I have to confess. I work in cybersecurity for many years. I basically help companies being protected and all of that. I do white hacking for my customers so that we test their environments and all of that. So I think I'm very pretty into the topic. And I started to prepare myself for that certification. And I was like, whoa, this is nice. I have to learn this. Yeah, I never had the opportunity, you know, to learn this little topic in here. And this is very interesting. And I started to learn that. And I'm like, whoa, I could have used this in that project. I can use this in that customer. So, it's all this journey that we get, all these new things that we learn that otherwise, if it wasn't a certification, with the limited time that we have, I probably will never touch on those topics. So for me, definitely the journey, it is the great way why I, want to get certified. So that's something that I always like to tell this to people, because sometimes, trying to demystify a little bit this. So there you go. Then, of course, why? Microsoft runs the second largest cloud in the world. Okay, there are some numbers that says, hey, it's already the first one, etc. But this is just for you to see just the dimension of this. We're talking about 68 plus regions. It's not data centers, because each region has more than one data center. And this is where all the services that you use on a daily basis when you're using something around Microsoft, they are. This is where lots and lots of services from other companies are running too. For example, I'm doing this from Microsoft Teams, right? So I'm using a data center somewhere in one of those regions. We're talking about hundreds of data centers. So we're talking about millions of hosts of servers, physical servers that Microsoft owns, and where we all run this. This is a massive infrastructure. Okay. Really, really
a big infrastructure. And not just that, it's just all the cabling around, the sea, around land, that connects all of this. So we really have stuff that is, really, really, really big. Okay. Why people say, why cloud computing? And specifically, why Azure? That's my specialty, by the way. Okay. So when people ask me why Azure and why should I learn Azure? Well, there's a huge demand from customers right now. And to be totally honest with you, there's a huge lack of professionals in the market. And by the way, sorry, good professionals, okay? Professionals that want to learn, professionals that, they are certified. That's the trick in here, okay? It's fun to work with. Every project that I do, I always do this new project in a different way. There's new services for me to use because Microsoft just launched new services. There's new features on existing services. So it's always awesome, what we can do with this. But let's just talk about how Microsoft builds a certification, by the way. You know, because nowadays we live in what I call a connected world. For example, I'm currently doing a project right now. It's for a company in Switzerland. I'm based in Portugal, like I already had the opportunity to share, and I have members of my teams that some are in the Netherlands. I have someone in the US, Italy, UK, Romania, and we have none in Switzerland. Only the customer is in Switzerland. And so, the world has changed. The world is not just that local world that we just live in our bubble and we're not affected by stuff that happen in other sides of the world. We are. Technology, you know, led us to that because we use the same technology, all of us, And so, of course, if there is an advanced in technology, we also get that. We also are get the benefit out of that as a whole society, as a whole world. And so having these connections and all those connections leads to Microsoft need to rethink, all their certification problem, which they did some time ago. And, cloud is the thing, everything runs on the cloud nowadays. And so this is where the demand is. This is where we have tons and tons of organizations, crying every day for professionals. You don't imagine, the number of requests that myself, Guzman, Usman, we just get on LinkedIn from people like, hey, we need a sub person for this project. You want to work on this project? Da 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 da. Because, people are totally always looking for someone, to build their projects and to do their stuff. And so you, as people that are getting started on this, it's a great opportunity, great opportunity to be in the market and with a certification, really making sure that you show to organizations this person as a certification. He has interest in learning more. He's a person that is going to look at this and is always wanting to learn more. This is why this is the typical person that wants to take a certification, because the person that doesn't want to learn is the person that's never going to take a certification. Okay, never. So there's always a great difference there, and companies look at your CV and say, wow, this person has a bunch of certifications in here. So that's pretty cool. So how does Microsoft builds certification? So very easy. That's nothing fancy here. But there's a process that's called a job task analysis that you can look here on the left. In this job task analysis, what Microsoft does is they just, sit a bunch of subject matter experts and they identify some job roles and they see, oh, look, there is space here to create, like, for example, an Azure administrator certification. Sure, they do some market research on that. They look, yeah, there is space for this. It's an important role.
So let's sit the SMEs here, the subject matter experts. Usually we did this in a room back in the days. Nowadays it's usually more via Teams. But let's just sit together and, let's just discuss for this takes like 3, 4 days, by the way, a list of skills, you know, that are what we think an Azure administrator must have. And I'll just tell us like, oh, he needs to be able to, go on Azure and create a virtual network, manage a virtual network. You should be able to go on Azure and create virtual machines, manage virtual machines, making those virtual machines secure. So all of this list of things, it's in that output. And then, which is basically a list of bullet points, okay, just for you to know. Then what happens is with that output from the SMEs, from the job task analysis, Microsoft builds all the digital skilling. They create events for you. They create classroom training and they create certifications. So those certification exams. So this is what we get, out of this. If we see all those aligned experiences that we have digital skilling, which that's Microsoft Learn. And I'm sure you already know you can just go on Microsoft Learn and there is tons of free content there, like tons. I will show you that too. I'm not sure if someone already showed it, but I'll just very quickly show you that in just a moment. There are events like workshops that Microsoft organize, conference. There is also community events. Join a local community and see what they are doing. I run some communities, and we organize free events for people to just join. And we're super delighted to have you, okay, in our events. To be totally honest, it's always nice to be able to touch more and more people and grow our community. It's also a nice opportunity for you to also to meet other people, network. So it's not just, the topic that we're going to cover there. That always important, that part too. Classroom training, where you get like a proper classroom training, taught by a Microsoft certified trainer, someone that already has the certification. He has years and years of experience, also has the capability of teaching, which we all know there are very smart people, but they don't have the capability of teaching, right? I have some people in my team that I will never put in front of an audience, but they are like awesome. They are super good professionals. We can't do all the same, so that's fine. And then we have certifications where you get the certifications and you get that validation that this. And you get a validation from whom? You get a validation from the vendor, Microsoft itself. This certification that you get here is exactly the same that I get in Portugal, the same that someone gets in any other place in the world. So we are on par, okay? And there's no questions like, oh, it's not like a degree, And with all respect, degrees are super important. I'm like a huge fan of them. I took mine, and I always advise everyone to take theirs. But we all know that, there's universities and there's universities. Sometimes the deep on the course or the one course is more focused on a certain topic, the other in another certain topic. I'm not saying one is better than the other. It's not that. It's just they are different. But in here, no, it's the same thing. All over the world, this standardization, which is like awesome. What kind of, certifications do we have? So we have like to start four 3 levels. Let's just say three for now. 3 categories of levels. Fundamentals, which is, foundational skills. It's a great path for you to then later, you know, get a job, get the experience, and then go for the role-based certifications. Okay, the role-based certifications go deep in some topics, and I will just show you some in a moment. And then we also have the speciality. Okay, the speciality is a type of certification that basically allows you, to go on a very niche topic. And you have like here an example of one, which is basically Azure for SAP workloads. So that's a pretty cool one. Okay. This is niche. It's not everyone that does SAP on Azure. Okay.
In my whole career, for example, I only did one project with this, and I have that certification, but you know, I only did this once. So there are people that will never do this. Okay, so it's very niche, very special, but yeah, that's the speciality, that we created in here. So what kind of certifications do we have? And I will send, okay, the presentation so that you get access to this presentation. But if you see here in the Azure data security, let's just say roleways, we have a bunch of fundamentals in here. We have like something called Azure fundamentals, data fundamentals, AI fundamentals, security fundamentals. So all those are important. I always advise everyone to get this one, the Azure fundamentals. Look, everything that is now today in terms of cloud computing in Azure, if you go work for the data world, the AI, or security, or if you go on the Microsoft 365 route, Power Platform, Dynamics, where do you think all that runs? All that runs in Azure. So getting this certification, for me, it will always be the first that I advise everyone to get. Even if you tell me that, Tiago, I don't want to work directly in Azure. What I want to do is, data stuff. Sure, there is so many dependencies on Azure that you really need to know that eventually. So just get started with that so that you get that very good foundation. And then, sure, get another one, in something more specific to you, like data fundamentals, like security and so on. Okay, so basically that's what we have here. And then of course, on top of this, a more, just more experienced part is you have the role-based sections. The role-based, it's divided into associate certifications and expert certifications. So and in here you can see like a Azure administrator, probably, from all this list, the other one that I will advise you to get for sure. Developer, if you're more in the dev topics, network engineer. This is incredibly is an associate level role base. It's a little bit more specific to networking. This is Windows Server, and then you have the expert stuff like an Azure architect, DevOps, okay, engineer, or a cybersecurity architect. So that's what we have here. And look, I'm not going to tell you the names here, but we have like a bunch of other stuff in between here. Okay, so really cool things that we have. We also have more stuff on the Microsoft 365 world, where we have here like the Microsoft 365 fundamentals, and then on the Microsoft 365 teams, and a little bit more on the development side of things, we have other stuff in here. And then we also have an area that's now a very, cool area to work. A lot of people are wanting to work on this, and this is like awesome, which is like the Power Platform side of things, where you can have, Power Platform for, building applications in a, very drag and drop thingy world. You can work with, like, for example, data analysts, where we're going to work a lot with Power BI, so that you can build dashboards and things like that. So that's like really cool too. And also basically also with flows. Okay, so basically do some integration and some workflow building and building processes and stuff like that. The other part is dynamics. And look, dynamics is like, wow, this is like huge. The number of certifications that we have here, but definitely get through the fundamentals there, okay? So the fundamentals on Microsoft 365, and then we have associate, but dynamics is very much in terms of a lot of verticals. Okay, this is a lot of the business processes of the organization. So you have like sales, marketing, customer service, field service, and through all of those, they have certifications for each one of these parts. This is like very, very big, to be totally honest. The dynamics world nowadays. So this leads me to, how do you get certified? Well, that's easy. You take an exam and you pass. But how do you get there, right? So
There is instructor-led training. There is video-based learning training. There are events online, cloud-ready skills. Okay, Guzman was just showing that before. There is Microsoft Learn with free stuff there. There are books and there are practice exams. Look, it's a mix of all of this. And I'm not saying this is your path. You should take this path. Because, to be totally honest, it depends on you. We're all different. I like instructor led training. I don't, maybe because I'm a trainer, okay? But I like to be there focused for 2, 3 days, 4 days, how many days it's needed. And I'm there and I'm just focused on that, you know? There are people that if we tell them like, hey, you need to be in the class for, like 3 days in a row, they will freak out. They'll say, what? 3 days in a row? I can't do that. I can't focus so much time on something because I just can't, because work wise I don't have the availability, whatever. Yeah, this is why there are other modalities for this. So just go on Microsoft Learn by yourself, then go and check some videos. Okay, it's up to you. Okay, so we're all different, so never forget that. So prepare. How do you prepare this? So this is my 4 steps to get certified. And the 4 steps is pretty simple. First, get the objective domain. Okay? Get training resources. Practice. Take the exam. Let's go first for the first part. The objective domain. What is the objective domain? So how do you do this? So you just go on your browser and you just search for the code for the exam that you want to take, like AZ900. And if I want to take AZ900, then eventually you get to a place where you have like something like this from Microsoft, like learn.microsoft.com. Okay, yeah, that's the one that I want. Cool. This is the page of the exam. And you scroll down, scroll down, scroll down. And you have this green area here. And in this green area, you have this study guide. Okay. And if you click on that study guide, this will open. It's just a PDF. And on this PDF, you have this area that says here, skills. Let's just scroll a little bit more. Skills measured starting on that date. That's the current one now, sure. And we have here, okay, basically all the areas that will be on the exam. Areas. But then you're like, describe cloud concepts, Tiago. That's great, but that could mean so much, right? Yeah, it can. And this is why we have that area here described with precision, bullet point by bullet point, what exactly this is. Got it? So definitely, this is my first, always my first part when I'm preparing for a certification is let me see what the objective domain of the exam is, because if I don't know this, I can't prepare for the exam. Okay. The second part that we have is what? Second part is get some training resources. For example, in my website, I have tons of study guides there for some stuff that I teach. I don't have for everything, but I'm building a new website even now with more training resources where I'm going to also to ask, other community members to see if they can contribute to that so that we can make it grow. Um, but there are also the official courses, cloud ready skills. There's Microsoft Docs, Microsoft Learn, free practice assessments, measure up, practice tests, LinkedIn, Pluralsight. There's so much out there. This is just, some of the stuff that you can get there. So let's just go back here. So the same page, and let's see some more cool stuff. Learn resources. If you scroll down in the exam page, and by the way, this is the same for all the exams, okay? And if we scroll down, you can see here some learning paths from Microsoft Learn. And so look, if you just click on this to open this, there you go, describe cloud computing. And then look, you have here, you know, basically tons and tons and tons, of basically of content to read. And look, this is like awesome. And sometimes we have like this little videos in here. So that's pretty cool that we have here. So there you go. Let's close this. Also in the same page. So this page is gold, to be honest, okay?
in the same page where you have this, oh, schedule the exam, and then you have here the exam code. Some exams and most of the fundamentals have this. You have this part that says take a free practice assessment. And if you click on this, this will lead you to a website where you have assessment questions. This is not the exam questions, of course, but they're pretty similar to the stuff that you have on your exam. So cool stuff, and you just basically select here the ones that you want. This is like which two attributes, blah 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 blah, and then you can click check my answer, okay, and then this will give you if your answer is correct or not, and then you learn with this. The way that I learn with these questions is pretty simple. I just look at the question. Hey, I know the answer. This is it. Check the answer. It's good. Okay, next. I don't know this. So yeah, let's just open a tab and research about that topic, right? Let's research where. This is where I go to Microsoft Docs, learn in order to, basically understand a little bit more of that. Also, practice. Use the service that we're talking about. If you're talking about Power BI, look and build some dashboards on Power BI. If you're talking about Azure, yeah, just go to Azure, build a website in Azure. Just if you're getting certified to be an Azure developer, just code something, deploy it on Azure, use Azure services, to support your app. Like I'm going to use storage, I'm going to use a database, I'm going to use, this service to send notifications, and just get a free trial account and just use this. Build a lab, okay? Create, have fun doing this, and we have to have fun, okay? And then take the exam. And where can you take the exam? Well, there's two models for taking the exam. You can just go on an exam center, or you can take the exam from home. Just the exam center, to be totally easy with you, it's just easier. You just go there. You don't have to prep your room, nothing. You just sit on a allocated machine that they have there, like the ones that you can see there. You just sit and you take the exam there. So that is that advantage. Taking this at home, well, there's the advantage that you don't need to go to a testing center, and I don't know about in your case if you have a nearby testing center or not, but not everyone has a testing center nearby. But taking the exam from home, it is much more convenient. But you need to make sure that you have a space where it is secure for the proctor, because there's a person on the other side checking on you that you're not cheating the exam. So they're going to make sure that you take pictures. You need to be always on camera, um, and you need to be on a place that doesn't have screens and notes on the walls, and stuff like this. So just get like the most, let's just say, non-tech room that you can get, and with less things on the walls, etc., so that it's just easier on you, to take the exam. But then when you sign up for the exam, there's a full description of things that you can and you can't have, and so stuff like that. And that's it. Okay, so that is my presentation. I will not bother you anymore. So thank you very much. My name is Tiago, and this is how you get Microsoft certified. And if you want to follow me, you can just type follow.tiagocosta.com, and you have all my social networks there, and you can follow me, or you can just use this QR code, and you go to that page. And I don't know who's next, but Usman, are you there? Thank you, Tiago. Thank you very Uh, much for your time and for a wonderful presentation. It's a really honor for having you in our session. Thank you. It's all my honor, to be honest. Um, Mr. Javed Iqbal, are you there?
जावेद साहब आप साथ हैं?